Please, over to you, sir. Over to you, sir. Okay. So we can present the bonjour, bonjour la classe. Vous allez bien? I've just said good morning or hello. Bonjour in French is hello. And I expect the class to say bonjour also, because bonjour is a language. When we say bonjour, your response also should be bonjour. Bonjour la classe, bonjour Monsieur Isaac, or bonjour. So this we are going to look at today. I'll be instructing you on French alphabet and accents. And Sir Razzaq will present it quickly. He has the slide. Very good. Just as yesterday, we have one of our students, Madam, our student, Madam Ma'am Tahmina. Mustafa, Tamina. She wants us to start with the alphabet, which is a good idea. Now we are going to look at the French alphabet with the accent. Now, when you look at A, normalement, we say in French, just like the French alphabet have 26 letters, and they have their pronunciation. We have a majuscule and minuscule. Majuscule is the capital letter A, and minuscule is the capital letter A. That's why we have it in small letters. Now, in French pronunciation, when we say A in English is A in French, just like you say A. B in French, we say B in English, but B in French, just like you can see the phonetic pronunciation. B, say, just like you are saying in English to say. Day, like the day, day in French. E is e, like you say you want to say e. F is F. You see the double F, F. G in English is J. You know, there are some people who answer J. H, you can see the pronunciation of H in French is H. I is E. G, K, L, like you want to pronounce she. She in French is L. So L, letter L in French is L. M. You see, your pronunciation with a full mouth, with a tight mouth, you say M. Then we go to the letter. We have O, like in the N. O, like you want to make an expression. O, with your mouth potted. O. And P is pay. Q. As in the pronunciation you've seen on the presentation there, Q. R, like you are saying air.
So R is air, S, 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 S. Like you want to pronounce like something like September, you say septembre. S, S. T is T, T, T. Like you say in French, you want to take, there's some coffee, you can say Doma la T, 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 U, U. V is V. And then you see the WV is 2V makes W. That's why we call it W. W. X. Isk. Isk. Normally, when you are pronouncing X in some letters, because of the influence of, I told you that um, French words is derived from Latin words. And sometimes we have accent grave, we have accent aigu, we have accent circumflex. So all this accent changes the meaning of the words, changes the meaning of the words or the pronunciation. So like X, most times when you're pronouncing things, you will see it is pronounced as X, isk, and Y is egret, egret, and Z is Z. So at your own time, you practice the pronunciation of A, B, B, C, C, D, 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 I, E, 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 F, 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 J, J. You can see the word J and the word J. You see G, J, G, J, H, 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 I, J, J, K, 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 L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, 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 R, 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 S, S, T, T, U, U, V, V, V. Your two lips together and you let out the air. V, W, W, Isk, Isk, S is Isk, Y, 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 Z, Z, Z. These are the these are the French alphabets. And if you want to master this alphabet, you have a dictionary. If you have a French dictionary with you, you see, if you open the dictionary, you check A, you'll see the phonetic pronunciation. Every alphabet has its phonetic pronunciation. And we can see, unlike English, French alphabet is 26 letters. So let us pause and I will give my colleague opportunity to read it again and you repeat after him. Over to you, Sir Razzaq.
Thank you very much, Sir Isaac. Uh, Please let me allow that I will be delivering this a few words in local language, because all of the participants, they are not well aware of even from English, due to the accent, your accent, and they might not be understanding. So just a few words I will be switching in the local language so that they can better understand. With your No permission, problem. Sir Isaac. Thank you very much, sir. Go on. आज बेसिकली तमाम जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मोस्टली जो हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, मैं उनको कॉर्डियली वेलकम करता हूँ। और उसके बाद ये है कि आज हमारा पहला सबक है, और पहला सबक है हमारा अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। और अल्फ़ाबेट्स कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कुलीग्स हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो फॉर देम मैं इनके लिए जो है ना एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। आप एक दफ़ा इसको देखिएगा। इसके बाद मैं एक दो स्टूडेंट्स से ये रिवीजन करने के लिए उनकी अपनी आवाज़ में पूछूंगा। प्लीज़ इसको फोकस्ड होकर ज़रा इसको थोड़ा सा सुनिएगा। तो जिस तरह हम हरूफ तहजी या अल्फ़ाबेट्स हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेम इसी तरह ये इतने ही अल्फ़ाबेट्स हमारे मौजूद हैं, इंग्लिश से फ्रेंच में मौजूद हैं। लेकिन ये जो फ्रेंच लैंग्वेज में हैं, ये थोड़ा सा उनके एक्सेंट में या थोड़ी सी अदायगी में डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पढ़ता जाऊंगा और आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि फ्रेंच में उसको क्या अदायगी है, और इंग्लिश में पढ़ूंगा और साथ में फ्रेंच में उसकी अदायगी किस तरीके से है, ये मैं आपको बताता जाऊंगा। ए, आ, बी, बे, सी, से, डी, डे, ई, अ, एफ, एफ, जी, जे, एच, एच, आई, ई, जे, जी, के, का, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पी, पे, क्यू, ख, आर, एग। इस आर के ऊपर खास आपने जो है ना वो फोकस रखना है। आर एग बोलेगा, गैन की आवाज निकालेगा लास्ट पे जाके। प्लीज इसको सही फोकस्ड होके सुनिएगा। ये एयर नहीं पढ़ना आपने, इसको एग। ये इसका एंडिंग जो है ना गैन पे होगा जाके, गैन। और उर्दू हरूफ तरजी का लफज गैन, अग। इस तरीके से इसकी एंडिंग जो है ना, अग। एस, इस, टी, थे, डब्ल्यू, यू, वी, वे। और ये डब्ल्यू जो आप देख रहे हैं, ये तो कि दो वे बने हुए हैं या दो वी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। हम इंग्लिश में इसको डब्ल्यू कहते हैं, लेकिन फ्रेंच में डब्ल्यू। एक्स, एक्स, वाई, इग रैक, जेड, जेड। तो एनी वॉलंटियर, एनीवन? मैम तमीना, इफ यू वुड लाइक, प्लीज रिवाइज दिस। मैम तहमीना। अस्सलाम वालेकुम। आई वालेकुम जस्ट अस्सलाम। जॉइंट। बहरहाल मैं ट्राई करती हूँ, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप प्लीज बताइएगा। कोई बात नहीं, प्लीज रिपीट। ए इज कॉल्ड आ, बी डी सेम, सी डी आई थिंक सेम, डी डी डी, ये ई को ऊ, आगे इसके लिखा हुआ है डी, डे की तरह पढ़ना है आपने। यानी ये आगे जो तलफुज लिखे हुए हैं, ये तलफुज में लिखा हुआ है बेसिकली। डी को हम इंग्लिश में डी ओके, कहते हैं, लेकिन तलफुज है डे। फ्रेंच में उसका डे, तलफुज है डे। डे, ओके। ई, यू, एफ, जी को जे, एच को एश, आई को ई, जे को जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, आर, एयर, ए नॉट एस, एयर, एग। टे, नॉट एयर, इसको एग पढ़ना आपने, यू, एग। यानी गैन पे एंडिंग करनी है इसकी। एस, सॉरी, एस, ओके, एस, 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 टे, यू, वे,
W, X, Y, ये आर नहीं Z, बोलना, बस ये ख्याल कीजिएगा, इग गैक, Y. गैन बोलना है आपने, आर Okay, नहीं बोलना। यानी रे नहीं बोलेगा, okay, गैन Y. बोलेगा। Okay. जी, मैम फरा हैज रेज्ड द हैंड, प्लीज मैम फरा, प्लीज वुड यू लाइक टू रिपीट दिस? थैंक यू मैम Yes, कमिंग अप। sir. जी प्लीज मैम। A, A, B, B, C, C, D, D, E, T, F, F, G, G, H, H। सर आप मुझे बोल सकते हैं मुझे कि अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आप मुझे मैम कह दीजिएगा। जी कोई इशू नहीं है, आप प्लीज कैरी ऑन। मैं आई आई वुड अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव, प्लीज गो ऑन। I, E, J, G, K, K, L, L, M, N, 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 O, O, P, P, Q, Q, R, S, 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 T, C, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, E, G, sorry, E, G, इग Z, गैक। Z, थैंक यू E, वेरी मच, थैंक यू वेरी E, मच मैम। G, इग गैक। Thank you very much, ma'am. Sir Isaac, here I would like to add that they Or not all can they all have started from they are it is their first day even, and you have seen their oh participation. I think it's really awesome, sir. is yeah, so yeah, I like their participation. It's very awesome. Well, can another person attempt? Can Yes, somebody try again? Sir Someone Vakas, else? please, over to you. Okay, sir. A, B, B, C, C, D, D, E, U, F, F, G, J, H, H, I, E, J, G, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, 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 इग गैक, ये आर नहीं बोलना, बस ये ख्याल Y, कीजिएगा। Y, इग गैक। Y, 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 right. Z, Z, Z. Thank you very much, all participants. Over to Sir Isaac. May I proceed to the next slide, or have something to say in this at this slide, sir? Yes, for the last speaker is good, but I still want him to improve on A is ah, ah. You understand? And the when we come to W is W, W, W. Then you have been correcting them on Y, Y, Y. So all those things are important as we continue. They will now see the this alphabet, how it is used in making phrases or pronunciation of words. Okay, we can continue the next slide, please. Okay, Maxi, I'm proceeding, sir. So they no, let's see that alphabet. We can explain to them why we use the alphabet. The next slide, please. Yeah, we say, why do we need to learn the alphabet? We have seen in the
presentation because the letters of the alphabet are like the music notes. It's like a romantic note of the French language. Knowing their names and the sound they make, enable you to read, to speak, and to write or to communicate. So the letters, once we master the letters, it will enable you in pronunciation. It will enable you in communication. Most times, that is why it is very important to speak with the native language. I mean, those that understand French language. Like we said earlier on, that French is used in Canada, some part of Canada, in Belgium, in France, and some part of African countries. So when you speak with them, you see the intonation, there is, most time when you hear them speak, they use the R, R. They speak like they are speaking from their nose. So that is why the alphabet is very important. It will help you in sound making. Sound, the sound. You see, like your name, Temina. If we want to say Temina, we can say Temina, Temina. If I want to say Isaac, I say Isaac, Isaac. Remember, my name starts with I, and I is E, Isaac, Isaac. Some will say Isaac. So that is why we need to learn the alphabet. It is used for easy communication in speaking, in reading. The next slide, please. I will share this presentation in the group so that all would be able to listen the alphabet song themselves, sir. Should Go I? on. Yes, please. This one, Sir Isaac, sir. Okay. Now, look at the word F, L, M, N, S, Z. They sound the same, don't they? Look at the word B, C, D, P, T, V. They are nearly, the sound is nearly the same. And you see, when you look at the letter from R to S, you see the different sound of when you are making the sound A, A, E, G, H, H, I, I, G, K, K, O, Q, Q, E, E, U, W, W, ISK. You see, it sounds different. So the focus on learning what is different, you focus on the different sound so that once you are pronouncing any words, you can be able to use this alphabet to make good your pronunciation. So please, Sir Razzaq, can you explain them in your language, please? Yes, of course. Thank you very much, Sir Isaac. इसमें आप देखें कि हमारा ये जो फ़र्क है ओवरऑल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का है और उसके साथ जो हम अदायगी करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की, तो उसमें अदायगी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको समझिएगा, साउंड द सेम जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे यानी ये FLMNSZ, जब हम इनको से
एम, एल, एफ, जेड, ये तकरीबन एक ही गो में अदा होने वाले एक ही तरह के अल्फाज, मतलब एक ही तरह इसका एक्सेंट है और एक ही साउंड इनमें निकल रही है मिलती जुलती। और जो दूसरे हैं बे, से, डे, पे, टे, वे, ये सेम है और ये डिफर कर रहे हैं। और बाकी जितने भी बच रहे हैं पीछे, इन तमाम की जो अदायगी है ये थोड़ी डिफरेंट है। सो जब हम लर्निंग पे फोकस करते हैं तो हम ये ज्यादा इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं कि अल्फाबेट्स अगर आपको आ गए तो बुनियाद सीधी हो जाती है। अल्फाबेट्स के ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे सर एक्सक्यूज आइजैक। मी, आवाज बहुत कट रही है। जी, अभी आवाज क्लियर हो रही है? जी जी, सर, क्लियर है। बेटर। अच्छा, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। शुड आई रिपीट, मैं दोबारा बताऊं? यस प्लीज। Yeah, yes, please repeat हाँ so ठीक। that they can catch what you've said. ये जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ फ्रेंच अल्फाबेट्स, यानी वो सेम है लेकिन अदायगी में डिफरेंट है, इस वजह से वो डिफरेंट हो जाते हैं सेम ही, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से अखज की हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसके थोड़ा सा जो है कि अदायगी और एक्सेंट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो पहले वाले जो लफ्ज लिखे हुए हैं, जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इसमें ये एफ, एल, एम, एन, एस, जेड, ये जो है ये अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज में अदायगी इनकी करते हैं तो ये एक तरह से अदा हो रहे हैं। जबकि बे, से, डे, पे, टे, वे, ये सारे के सारे जो है ना ये अलहदा से इनकी एक तरह से, लेकिन इनकी अदायगी जो है एक्सेंट इनका सेम है। और बाकी जो लास्ट थर्ड रो में जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जो लास्ट डबल वे और एक्स, ये सारे के सारे, ये जो आ, ई, ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल इनकी डिफरेंट तरीके से अदायगी है। हम जब सीखने की उसमें जाते हैं तो हमें ये बेसिक अल्फाबेट्स जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। तो दैट इज द रीजन कि हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सर इजैक, मे आई प्रोसीड नेक्स्ट? Yes, you can proceed. Next slide, please. यस, ओवर टू यू सर। We have already said before that we have 26 letters like in English, but we need to pay attention because you see, when we say A is different, the sound different from A. You know, in English, you can say a book, you know, that is A, but in French, you say A, just like we want to say aller, aller. E is in English. E, you can say English with E. But in French, if you say it's E, E. Now, from this A, E, G, H, I, J to X, in English, they have their pronunciation, their sound they make. But in French, it's different sound. Well, that is what we want them to know. It is different sound. It sounds different. It's like it's a romantic sound. The sound is you know, we see also the vowels in French. We use what is called vowels, and we have about 6 or 7 vowels. We have seen this in A, E, I, O, U, I. In the course of our learning, we are going to study the vowels. Then also we have the consonant, which is called in French consonne. The consonne, we have about 20 of them. In the course of our studies, we are going to see why the vowels pronunciation and the consonant, they are different. So we are not going to miss them. So don't miss the name of the letters of the alphabet, that sound and the sound it makes. What it means there is that, you know, in the course of our using the alphabets, we are going to see how the vowels is used. We are going to see how the consonant or the consonant is used. So these important points in the course of maybe we want to make sentences, we want to call names, we want to call names of things, we want to call names of place. We are going to see how these words are used in French and in English. So over to you, Sir Razzaq.
थैंक यू वेरी मच। इस स्लाइड पे बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है कि हमारे जितने भी फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें छः जो हैं वो वॉवल्स हैं, और रेस्ट ऑफ द वॉवल्स दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स लाइक इंग्लिश। और इसको आगे किस तरीके से ग्रामर में यूज़ किया जाएगा इसका बेसिक होगा, और ये हमने अपने जेहन में रखना होगा। तो इसको काइंडली ज़रूर जेहन में रखिएगा। इसमें एक वाई जो है ना वो भी इसमें ऐड हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा जो डिफरेंट है उससे। तो सर इज़ैक, टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, please. यस, ओवर टू यू सर। So when we are using the consonant, like in English we say Paris, but in French we say Paris, Paris, Paris. There's this R, you know. In English, the R is not, you don't see that the sound of the R in English. Paris, Paris, Paris. But in French, we say Paris, Paris. J'ai visité Paris hier. On peut dire euh, la dernière année, j'étais à Paris, Paris. So we can see the name Paris. You can see that P, A, R, I, S, but the S is not hard, is silent. So we say Paris. So the same thing with other words. So like we are going to see the consonant, how it ends. But you have to take note that when we are pronouncing some words, the end will be silent, while the body will be pronounced. This is the example that you have seen. Take, for instance, you want to say London. London. London starts with L, O, N, D, E, N, but in French is Londres, 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 Londres. So let's use those two examples to explain to them. Please, can you explain? यस ऑफ कोर्स। फ्रेंच में जो फाइनल कॉन्सोनेंट्स जो आ जा, जिस तरह ये पी है, ये एक कॉन्सोनेंट है। तो ये पेरिस हम रूटीन में पढ़ते हैं तो ये पेरिस की तरह पढ़ते हैं, पेरिस से लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको जब फ्रेंच में पढ़ेंगे तो हम इसे पागी, एस नहीं बोलेगा, पागी। ठीक है। और जो बताया है, हमारे इंस्ट्रक्टर ने कि ये लंदन, तो उसको लॉन्ड्र, लॉन्ड्र, यानी वो इस तरीके से वो भी आके एंडिंग जो है ना वो उसकी स्टॉप हो जाती है, वहां पे आवाज साकन हो जाती है। जिस तरह ये एस लास्ट पे नहीं बोलता और पेरिस की जगह पे पागी बोलता है, पागी। आर की आवाज जो है वो गैन और आई बोल रहा है साथ में, और एस खामोश हो जाता है। तो सर आइजैक, मे आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? Okay, proceed the next slide. Yes, we have last 3 minutes left. Okay, I think now this I one, think let's just take this one quickly. We'll take this one quickly. I want them to know this is talking about the days of the we have Ut, August, we have 5, we have 7, 8, 9. Now let's look at that pronunciation. We see there's an accent on top of Ut, 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 which is August. Sank, sank, 5. 7, set. We see the T will not be pronounced. Set, set, set. The same thing, we, which is 8. Neuf, neuf, which is 9. Okay, we have 3. Please just explain to them. Then maybe we'll give them this as an assignment. yes, When of course, they sir. go and check it. Yes, Yeah. of course, sir. ये इसमें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताए गए हैं। जिस तरह अगस्त हम इंग्लिश में कहते हैं, तो लेकिन फ्रेंच में हम कहते हैं आउट, आउट। संक, 5, अंग्रेजी में हम 5 कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे संक। और सेथ, पी नहीं बोल रहा इसमें, सेथ, 7। विथ, ये एच भी नहीं बोला, इसे हुईत नहीं पढ़ना, विथ, 8। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नफ, 9।
तो ये इस तरीके से हम इसकी अदायगी करेंगे। तो ये मैं आपको इसकी साथ साथ असाइनमेंट्स जो है ना वो आपके पास, यू विल बी हैविंग 5 days। तो इसमें आपको असाइनमेंट जो है ना वो दी जाएगी, वो आपने मुकम्मल करके जो ग्रुप में सबमिट करवानी होगी। Sir, the most important, sir, we have lost, Sir Isaac, 1 minute and 10 seconds, sir. Over to you, sir. Oh, okay. We want to thank them for their participation, but next time we'll go into the accent. But let them look at it. I believe that when we talk about the accent, we will explain better in the next presentation. Thank you very much. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. Merci beaucoup. किसी का कोई क्वेश्चन या कोई है तो काइंडली वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। प्लीज ये रेज योर हैंड। हमारे पास 1 minute है अभी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी मैम फरा, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। प्लीज अनम्यूट मैम फरा। Yes, sir. I want to ask Sir Isaac, how would you pronounce my name, Farah? Oh, Farah, okay. You remember F is F, A is A, R, A, H. So we'll say